Welcome back in the second video. Today is, I forgot in last video, today is 23rd of April, okay, 2020. Next is, so whenever a chemical reaction takes place, there is a heat change, okay. So if heat change is there, so in chemistry we have defined it by some special name. So that is heat of, so we call this as a heat of reaction. So we call this as a heat of reaction. We call this as a heat of reaction. We represent it is, or enthalpy of reaction you call it, it's same. So we write here delta H, and since it is for a reaction, so we write here like this. We give here subscript R. So please write what is heat of reaction. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको एंथैल्पी भी तुम लिख सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी. एंथैल्पी व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. नाउ लेट्स डिफाइन इट. सो एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज, enthalpy change in a chemical reaction. Enthalpy change in a chemical reaction when a given number of mole of reactant converts into product. When a given number of mole of reactant convert into product, completely or completely, it can be partially also, but in definition we write completely. ठीक है. Now here, so this is called enthalpy of reaction. We represent this way, delta RH. अगर यही अगर जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है, दे आर टेकन स्टैंडर्ड स्टेट. तो स्टैंडर्ड स्टेट में दिस इज रिटन एज डेल्टा एच, दैट इज डेल्टा एच नॉट आर. दिस नॉट साइन इज फॉर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट के लिए ये साइन है डेल्टा एच नॉट. स्टैंडर्ड स्टेट मीनिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इन स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर जनरली 298 एट रूम टेम्परेचर, ओके. एंड जो रिमेनिंग जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उसको भी जो स्पेसिफाइड फॉर्म है उसी फॉर्म में हम लोग लेते हैं. सो विल कम टू दिस, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट, विल कम टू दिस. बट कीप दिस माइंड, दिस इज मीन्स स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन दैट स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298. Okay. So for this heat of reaction or for enthalpy change during reaction, we have got certain laws, that is called laws of thermochemistry. So here laws of, next is laws of thermochemistry. जैसे अपना थर्मोडायनेमिक्स था, वैसे ही लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री मीन्स जब भी रिएक्शन होगा तो ये सारे लॉज फॉलो होंगे. जब भी रिएक्शन होगा तो ये सारे लॉज फॉलो होंगे. फर्स्ट इज लैप्लास एंड लेवोज़ायर लॉ. Laplace and Lavoisier law. Again, Lavoisier, if you see, we have done this in chemical combination, mole concept में किया हम लोगों ने. इसमें क्या था? If reactant converts into product, okay. तो इसके लिए let's say if delta H अलग लिखा है is X, meaning what? It is endothermic. If reactant comes for this reaction, the enthalpy change or heat change is plus X. Opposite लिया मैंने product. If product converts into reactant, the delta H will be minus X. Means अगर सिर्फ reaction को reverse किया,
So the heat change or enthalpy change, the sign will change. If this reaction is exothermic, opposite will be endothermic. This is Laplace and Lavoisier law. Okay. Next is, second is Hess's law of constant heat summation. So Hess's law of constant heat summation. Let's say if I take one simple case, let's say C plus C combines with O2, ठीक है, it gives CO2. जो इसमें heat change हुआ delta H is minus of 400, let's kilojoule. Let's assume, it's just a assumption. Here I have gone directly here, means carbon combines with oxygen gives CO2 directly. Huh? If I go in steps here, कि first I have combined this with half O2, so it gives CO. Okay, so इसमें मान लो 100 kilojoule of heat आया, and then again from here to here this combines with again half O2, so it goes from here to here. Then C plus half O2 CO, again CO plus half O2 CO2. तो यहाँ पे इसमें 4 जूल है, तुम यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसमें कितना आना चाहिए, minus 300 kilojoule. It will be always same, means either you go in one step or you go in multiple step. If you are reaching the same final product, the heat, total heat will be same. Meaning, if I write here delta H, let's say this is delta H, this is delta H1, this is delta H2. So delta H is equal to delta H1 plus delta H2. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूँ. Let's say I am going from A to B directly. So let's say this is Q plus Q1. But the same if I go from A to C and again C to B. तो इसमें अगर Q2 है तो इसमें Q1, Q2, Q1 minus Q2 heat इसमें आएगा. Total heat this will be this. This is Hess's law of constant heat summation. ठीक है? Means you go in a multiple step or you go directly in single step. Heat change, total heat change in single step equal to the total heat change in multiple steps. Summation of total heat change in multiple steps. So please write constant law of heat summation. So I hope that is, a reaction takes place in a single step. A reaction taking place in a single step have heat change, और इसको ऐसे लिखो, heat enthalpy change during a reaction taking place in single step equal to the summation of heat change from same reactant to the same final product and having intermediate steps. Okay. How it helps us? So please write the application of Hess's law. So please write what is its application. Application is, first application, Hess's law allows us to calculate, Hess's law allows us to calculate delta H for those reactions, delta H for those reactions which are difficult to calculate experimentally. Which are difficult to calculate experimentally. Meaning,
if you remember in I think chemical bonding or periodic table, we have used this, means to find the lattice energy we have used it, if you remembered it. याद नहीं है तो देखना जाके. To find the lattice energy of NaCl, any salt formations, we have used the Hess's law. क्या था इसमें? We have Na solid plus Cl2 gas. ठीक है, these two forms NaCl solid. तो ये हो गया डेल्टा H. यहाँ से यहाँ मुझे लैटिस एनर्जी फाइंड करना है. लैटिस एनर्जी क्या होता था याद है कि व्हेन 1 mole of a given ionic compound forms from its ion in gaseous state. So heat change or enthalpy change when 1 mole of a given ionic solid forms from its ion in gaseous state. Okay. तो यहाँ पे उन्होंने किया क्या था याद होगा. तो फिर Na को मैंने यहाँ पे लिया लेट्स से Q1, बिकॉज सॉलिड से मैंने इसको किया कन्वर्ट सब्लिमेशन Na गैस, तो इट विल बी सब्लिमेशन. देन अगेन मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ इसलिए ऊपर जा रहा है. इट्स अ बॉन्ड हैवर्स साइकिल, आई थिंक सबको याद आएगा अभी. सो मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ तो इसलिए एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. देन अगेन हियर Na गैस, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किया सप्लाई, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. देन हियर फिर इसको अगेन दिस प्लस Cl2, यहाँ पे हाफ Cl2. अभी इसके बाद इसको मैंने किया Q2, हीट ऑफ मीन्स Cl मॉलिक्यूल को मैंने कन्वर्ट किया Cl एटम में, हीट ऑफ एटमाइजेशन. सो इट इज Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Cl गैस. उसके बाद Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, दैट इज and it is electron affinity. Electron affinity is always negative, so energy decrease होगा. So that is electron affinity. So energy is going to decrease. So यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, electron affinity is always negative. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Na plus plus Na plus gas plus Cl minus gas. Now when this converts into this is delta H lattice. Here experimentally we cannot find this because Na plus in gaseous state and Cl minus in gaseous state we cannot form. Na plus and Cl minus in gaseous state is very difficult to form. So this is a bond-Haber cycle. So you can say I have gone through a single step or I have gone through multiple step. So यहाँ पे क्या होगा, तो delta H by Hess's law of constant heat summation, delta H equal to Q1 plus IE. Which sign you have to put this? IE plus Q2 plus electron affinity. Again, electron affinity always negative, so I have not taken sign. You know this. Plus delta H lattice. From here you will get the delta H lattice. Okay. So this is the first application of Hess's law. Second application लिखो. Second point. Hess's law allows us to treat. Hess's law allows us to treat thermochemical equation. Hess's law allows us to treat thermochemical equation as an algebraic equation. Allows us to treat thermochemical equation as a algebraic equation. Now here what is thermochemical equation? What is thermochemical equation? So thermochemical equation meaning, so next give the heading, thermochemical equation. Thermochemical equation, it's simple, it's a chemical reaction. तुम वो लिख दो जो भी reaction लिख से यहाँ पे हो रहा है C2H6 plus O2, that gives me CO2 plus H2.
So in thermochemical equation what we do, we write the reaction, we balance the reaction, that is important. Balance करो तो this is 2 6, this is 3 3 2 4 7, this is 7 by 2. Then you write the state of each reactant and product. So this is gas, this is gas, this is gas, this is liquid. We are doing at, let's say, room temperature. So this is called thermochemical equation, and along with that we write delta H kitna आया. For this reaction how much is delta RH, heat of reaction कितना हुआ. Then it becomes a thermochemical equation. क्या करना है? Write the chemical reaction, balance the chemical reaction, write the phases of each reactant and product, and write the heat change during the reaction. Okay. Now why this phase will affect, so that's our next topic. Give the heading, factor affecting enthalpy of reaction or heat of reaction. What are the factors which will affect the enthalpy of reaction and factor of or heat of reaction? First factor is, so please write first one, nature of reactant and product. Nature of reactant and product. ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लूँगा ये. सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन. सो लेट्स से फर्स्ट टेक, सो फर्स्ट ए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हाउ इट विल अफेक्ट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस, this is potential energy diagram, and you can see this is more stable than this because of resonance. अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री में किया हुआ है ऑर्गेनिक में. This is because of resonance, this is more stable. If you give this, if you do the hydrogenation 2H2, it is going to form this product. This is potential energy, this is rate और reaction. ठीक है, यहाँ पे भी तुमने दिया फाइनल प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा, बट यू कैन सी किसमें एनर्जी अधिक आएगा. तो एनर्जी रिलीज इसमें, ये इट्स एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. तो ये, तो दिस इज गोइंग टू रिलीज मोर एनर्जी, दिस इज लेस. दोनों सेम है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है. दिस इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कम होगा. तो दिस इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स जो रिएक्टेंट जितना अधिक स्टेबल होगा, दैट इज गोइंग टू रिलीज दैट मच लेस अमाउंट ऑफ हीट हियर. ओके, सो इट इज मोर स्टेबल. Next is nature of product. How the nature of product will affect. Just write it here. Nature of product. नेचर ऑफ प्रोडक्ट, लेट्स से फिर से वही मैंने ड्रॉ किया. एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखो. हियर इट्स अ रिएक्शन. लेट्स से वी हैव सी ग्रेफाइट in solid state. Again, carbon has got allotropic forms, graphite, diamond. So that's why I've taken graphite here. अभी मान लो प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने half O2 से इसको रिएक्ट कराया. When it is going to react with half O2, the product will form is CO. तो ये जो हीट चेंज होगा, this heat is let's say 110 kilojoule. It's a minus kilojoule per mole. Minus means it's a exothermic. Minus 110 kilojoule per mole. होना भी चाहिए, नेगेटिव है. वही अगर ये इसको तुमने रिएक्ट कराया with O2, so final product will be CO2. इसमें जो एनर्जी आएगा, again it is just, I am just writing, it is
it is minus 393.5 kilojoule per mole. So this is the energy, means the product, initial reactant is same but the product is different. One is CO, one is CO2. So that is the nature of reactant and product will affect. Now second factor, reaction condition. Reaction condition. So reaction condition, let's say, so this is reaction condition, meaning अगर let's say अगर मैंने एक रिएक्शन कराया रिजिड कंटेनर में, रिजिड कंटेनर मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो जो यहाँ पे हीट आएगा डेल्टा, जो यहाँ पे डेल्टा क्यू आएगा, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी। वही अगर यहाँ पे अगर मैंने पिस्टन लिया, पिस्टन कैन फ्रीली मूव और इसमें रिएक्शन कराया एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज अ मासलेस पिस्टन, इट कैन मूव फ्रीली। सो अगर यहाँ पे रिएक्शन कराया तो प्रेशर इज लेट्स से P is constant, तो जो यहाँ पे हीट आएगा that Q will be at constant pressure which is called enthalpy. And if you remember delta H is delta U plus P means delta Ng RT for reaction. So reaction condition means here it's a constant volume, here it's a constant pressure. दोनों में तुम change करोगे, the heat involved will change. Okay. Okay. नेक्स्ट इज, एंड जो कि हमेशा सब में होता है, दैट इज टेम्परेचर, जो कि हर एक केस में होता है, टेम्परेचर इज विथ ऑल। सो थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स हियर। लेट्स से if I take this, let's say reactant converts into product, okay, if I, let's say this reaction is carried out temperature T1 and the same reactant product carried out temperature T2, here it is delta H1, here is the delta H2. So if you remember, enthalpy depends on temperature. Enthalpy is अगर for gases NCP dt, NCPT, enthalpy change is NCP delta T and enthalpy is NCPT. So temperature change होगा, enthalpy change होगा. Similarly internal energy also depends for gases NCVT, or in fact if it is solid or liquid also, then also internal energy depends on temperature. So temperature change होगा, enthalpy and internal energy will also change. So that's why temperature is going to affect this. And if you remember, we have written this here, delta H by delta T at constant pressure is Cp, और इसी को लिखा था हम लोगों ने, because H depends, again if you just go through my previous video, H depends on pressure, temperature, volume, number of mole, internal energy. So these are the factors, and then we have by taking some constant we have converted into a simple form. Okay, we have converted this in a simple form. So there we have done this. Yeah. Okay, so if I generally here generally the dependency on temperature means for reactant different temperature can be derived from the Kirchhoff's equation, that is, but हम लोग अभी उसको हम लोग बाद में करेंगे, Kirchhoff's equation. So that we'll do means temperature dependency means enthalpy, how enthalpy depends on temperature can be derived on the
on by the Kirchhoff's equation. If I write that Kirchhoff's equation, let's say, since we are doing this, so let's do it. Let's say I have taken a reaction A, let's say AA plus BB, that gives me CC plus DD. Write it here, delta G, let's say G गैस, यहाँ पे लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है. उस केस में क्या करोगे, तुमको खुद से वो करना है डिसाइड. मैंने गैसेस लिए. सो ये डेल्टा H एट टेम्परेचर T1 क्या हो जाएगा. तो डेल्टा H एट टेम्परेचर T1 विल बी H ऑफ प्रोडक्ट at temperature T1 minus H of reactant and temperature T1. Product मतलब क्या हो गया, this is means product includes enthalpy of C at temperature T1 plus enthalpy of D at temperature T1 minus enthalpy of A at temperature T1, enthalpy of B at temperature T2. This we are doing for a complete reaction, okay. Means this converts into this. Enthalpy of C क्या हो जाएगा, NCPDT. N क्या है इसमें, तो इसमें stoichiometric coefficient will be N for this particular reaction, balanced reaction. तो CP of C into T1 plus D CP of D at temperature into T1 हो जाएगा. Because हर एक C अलग होगा, मॉलिक्यूल D अलग होगा, तो उसका CP CV भी अलग अलग होगा. दिस माइनस A CP of A into T1 प्लस B into CP of B into T1 हो जाएगा. So this is at delta H at T1. Similarly, delta H at T2. If I just write here delta H at T2 क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये सब से, because generally specific heat we take independent of temperature. So this is C into specific heat of C T2 plus D into specific heat of D T2 minus A specific heat of this into T2 प्लस B स्पेसिफिक हीट ऑफ B एट T2. यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. इसको T1 कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज C स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ C एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस D CPD माइनस A CPA plus B CPB, this into T1. This I have written as here delta CP. Delta CP means this into T1. वैसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, it will be delta CP at T2. Okay, so here if you subtract them, so delta H enthalpy at T2 minus delta H at T1, that is equal to delta CP at, so delta CP is common, so T2 minus T1, and this is known as Kirchhoff's equation. Delta CP क्या है, so delta CP is, and very important equation, delta CP is, delta CP is summation of summation of heat capacity of product multiplied by its stoichiometric coefficient, summation of delta CP क्या हो जाएगा, summation of, again अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, so delta CP is summation of heat capacity of product at constant pressure multiplied by stoichiometric coefficient minus
summation of heat capacity of reactant at constant pressure multiplied by its stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, summation of heat capacity of product at constant pressure, तो Cp of C plus Cp of D multiplied by its stoichiometric coefficient, तो it is C, it is D. This minus summation of heat capacity of reactant at constant pressure, so Ca Cp A plus Cb Cp B multiplied by stoichiometric coefficient. This is A, this is respective. So this is your delta C. तो यहाँ पे वही रखना है, and this is your Kirchhoff's equation which defines the which is going to define the enthalpy at given at two different temperature. किसी एक पे दिया होगा, तुम सेकंड पे फाइंड कर सकते हो, Cp निकाल सकते हो, Cp दिया रहेगा. In the same way you can also write the delta Cv. तुम इंटरनल तुम ऐसे ही तुम लिख सकते हो, फिर सेम इक्वेशन क्या जाएगा. तो डू दैट, इट्स योर ड्यूटी टू डू दैट. वो आ जाएगा फॉर इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर फॉर रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो दैट इज डेल्टा U at T2 minus delta U at T1. Change in internal energy of reaction at temperature T1 T2 will be delta Cv into T2 minus T1. क्या हो जाएगा ये. So delta Cv will be what? So delta Cv will be summation of molar heat capacity, summation of molar heat capacity of product at constant volume multiplied by its respective stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे क्या हो गया, that is Cv of C plus Cv of D multiplied by its stoichiometric coefficient. This is C, this is D. Minus summation of molar heat capacity of reactant. Again I think यहाँ पे मैंने molar शायद भूल गया, तो लिख लेना. Molar heat capacity at constant volume of reactant multiplied by its stoichiometric coefficient. So it is Cva plus Cvb multiplied by its stoichiometric coefficient. This is A, this is B, ये this is delta Cv. Okay. Next is the fourth factor which will affect is pressure. Pressure. याद करो जाके देखो, enthalpy and internal energy both depends on pressure. Okay. So here delta H is a function of pressure, temperature, nature of this ये सब है. Delta U also function of pressure, temperature in this. ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ करते वक्त किया, ये लिखा था, जाके देखना लास्ट वीडियो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, so if delta H depends on pressure, तो heat of reaction will also depend on pressure. Although this is not in syllabus, for us pressure is constant 1 atm open to atmosphere, but if pressure changes it will get affected. For fifth is physical state. Let's say if I take this, let's say H2 gas plus half O2 gas, that gives me H2O gas. Okay, and if I take H2 gas plus half O2 gas, it gives me H2O liquid. तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा H here अलग लिखा है मैंने, डेल्टा H here and डेल्टा H here will be different, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, गैस मतलब वेपर फॉर्म में, इसको गैस मतलब लिखो वेपर फॉर्म,
जब H2 और O2 रिएक्ट होगा तो वेपर फॉर्म में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कब होगा, अबव 100 डिग्री। तो इफ वाटर इज इन वेपर फॉर्म मीन्स इट इज अ स्टीम फॉर्म, स्टीम फॉर्म में तो इट इज अबव 100 डिग्री। व्हेन दैट स्टीम कम्स टू लिक्विड स्टेट, so when steam converts into liquid, it releases energy, so that energy will be also available for us. Okay, so here let's say it is, let's assume it is 246 kilojoule, just a number I am writing. तो यहाँ पे it will be 280 kilojoule because here vapor has converted into liquid, so that heat will be also available for our reaction, for our use. Okay, so this is the case. The sixth is allotropic form. Allotropic form, like we have a C in graphite, that is solid, plus O2, that gives me CO2 gas. C in diamond in solid form is O2, that gives me CO2. This is also gas. Here delta H, again it's a combustion, so minus 39.3 kilojoule, or let's say minus 393.5 kilojoule per mole. Here delta H is 395 kilojoule per mole. तो बताओ ये देख के हीट ऑफ कंबशन है ये, तो कौन है मोर स्टेबल? तो जिसमें कम हीट आएगा दैट इज मोर स्टेबल. सो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड. So thermodynamically, graphite is more stable than diamond. So thermodynamically, graphite is more stable than diamond. इन सारे रिएक्शन में हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज देखेंगे. स्टैंडर्ड के लिए एज आई सेड वी गिव, फॉर स्टैंडर्ड वी गिव डेल्टा H नॉट. दैट मीन्स स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मीन्स 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin is the temperature. Okay, so this is all about the heat, the factors affecting the enthalpy of heat. In next video I'll be dealing with the different heat of reaction, different heat and enthalpy of reaction. Okay, so thank you. Go for next video. Thanks a lot.